Assalamu alaikum class. In this lecture, we are studying the physiology of liver. Liver is basically the largest organ in the body, and its weight is 1.5 kilogram. That is reddish brown triangular pyramid shape. Where is liver located? The liver is located at, a, at the right side in the abdominal cavity below the diaphragm. Okay. And it is a reddish brown triangular pyramid shaped structure. So, largest organ, weight is 1.5 kg, reddish brown triangular pyramid shape, and located in the upper and the right side of the abdominal cavity, immediately beneath the diaphragm. Liver has hepatic lobe. We can also see in the diagram there is left lobe, right lobe, quadrate lobe. So the liver is made up of many lobes, which is called hepatic lobes. Each lobe consists of many lobules, which we call hepatic lobules. And hepatic lobule is the structural and the functional unit of the liver. As the structure and the function unit of kidney is nephron, the hepatic lobule is also the structural and the functional unit of liver. And these structural and the functional units of hepatic lobules are 50,000 to 1 lakh in the liver. And these functional units will form the honeycomb-like arrangement. And these hepatic globules, which are arranged in the honeycomb-like structure, is basically made up of hepatocytes, which are the liver cells. So, हमने इस डायग्राम के अंदर क्या देखा? पहली चीज कि लिवर जो है वो मेड अप ऑफ मेनी लोब्स है. वो राइट लोब भी है, वो लेफ्ट लोब भी है, वो क्वाड्रेट लोब भी है, वो कॉर्डेट लोब भी है. अब हर लोब जो है वो फर्दर लोब्यूल से मिलकर बना है. जो लोब्यूल्स है वो क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है. इन लोब ठीक, जैसे कि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, इसी तरह से ये लोब्यूल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर के. अब इन स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर हिपेटोसाइट लीवर के सेल अरेंज होते हैं. ठीक, अब वो अरेंजमेंट को जो है वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से होती है. जो हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट एंड द hepatic plate. The hepatocytes are arranged in column which form the hepatic plate, and each plate is made up of two column cells. In between the two column cells, each plate lie a bile canaliculi. Okay. हमने फर्स्ट देखा था लोब के अंदर लोब्यूल्स थे. वो लोब्यूल्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के थे, हेनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, और क्या थे? फंक्शनल यूनिट थे लीवर का. अब उन फंक्शनल यूनिट के अंदर लीवर के सेल हिपेटोसाइट अरेंज होते हैं. अब वो हिपेटोसाइट जो है वो जो है वो प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं. इन दो प्लेट्स के दरमियान में कैनालिकुलाई बनता है, जिसे बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं. हिपेटोसाइट के सेल जो सीक्रीट करते हैं बाइल, वो इन बाइल कैनालिकुलाई में आके ब्रेन करता है, और फिर वो डिफरेंट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के कैनालिकुलाई आपस में कंबाइन करके स्मॉल बाइल डक्ट बनाते हैं, और फिर वो स्मॉल बाइल डक्ट जो है वो लोब के स्मॉल डक्ट के साथ कंबाइन करके मेन बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो ड्रेन करती है. ठीक, अब वो कहते हैं कि दो प्लेट्स के दरमियान में तो बाइल डक्ट थी, बट टू नेबरिंग प्लेट्स के दरमियान में जो है वो सिनोसाइड होता है. अब जो सिनोसाइड ड्रेन कर रही होती है केनाल, उसके अंदर जो है वो हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक पोर्टल भी जो है वो ड्रेन करती है.
ठीक है. In between the neighboring plate, a blood space, which is called a sinusoid, is present, and this blood space contains the blood from the portal vein and the blood from the hepatic artery. And in between the endothelial cells, some special macrophages, buffer cells, are also present. In this diagram, we can see there is lobe and then there is lobule, and lobules are the hexagonal structure, and at the each end of hexagonal structure there is portal triad. I will explain already. The portal triad mean it contains the portal vein, it contains the portal artery, it contains the bile duct. Okay. Each corner of the hexagonal structure has six जो है वो portal triad. अब ये portal triad क्या कर रहे होते हैं portal triad बेसिकली, इसको हम देखेंगे. अब अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पोर्टल ट्राइएट जो है वो बेसिकली पोर्टल मेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट से जो है वो मिलकर बना होता है. ठीक. अब इसके बाद हमने बात की थी ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी एक चीज को एक फॉर्म को देख रहे हैं, अगर आप देखें तो ये लाइन ड्रा की हुई है, ये लाइन बेसिकली क्या है, सिनोसाइड की डायरेक्शन को शो कर रही है. सिनोसाइड वो स्पेस है जहाँ पे ब्लड जो है वो फ्लो करता है. अब ये ब्लड जो है वो इस लेवल के ऊपर कहाँ से आ रहा होता है, ब्लड जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन से आ रहा है, हिपैटिक आर्टरी से आ रहा है. हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन का ब्लड टू सम एक्सटेंट यहाँ पे मिक्स करेगा और ये ड्रेन करेगा मेन जो है वो सिनोसाइड के अंदर, और मेन सिनोसाइड से सेंट्रल जो है वो वेन बनेगी और सेंट्रल वेन जो है वो देन हिपैटिक वेन के अंदर ड्रॉ करेगी और हिपैटिक वेन इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा में ड्रेन करेगा और वहां से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ जाएगा. ठीक. इसके बाद हमने सिनोसाइड को देख लिया कि ब्लड किस तरह से आ रहा है. ठीक है. सिनोसाइड में इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल्स थे वो किस तरह से अरेंज कर रहे थे. जो दो सेल्स हैं वो बेसिकली अरेंज कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ, जो हेपेटोसाइट के सेल्स हैं वो अरेंज कर रही हैं टू एंड प्लेट्स की फॉर्म में. अब टू एंड प्लेट्स की फॉर्म में जो ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ से क्या बना था, बाइल कैनालिकुलाई, और बाइल कैनालिकुलाई ऑफ डिफरेंट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कंबाइंड टू फॉर्म द small small bile duct, and this small bile duct then form the large duct, and the large duct will drain into the gallbladder. So here we will see, here we will study the hexagonal structure, and the hexagonal structure contains the portal triad, and the portal triad contains the hepatic artery, portal vein, and bile जो है वो duct. And this bile and the blood, its direction is totally opposite to each other. In this diagram, we can also see here there is also portal triad, there is also portal triad, there is also portal triad. Okay. In this diagram, separately each portal triad and जो है portal triad is shown here. इस डायग्राम के अंदर जो है वो पोर्टल ट्राइएड जो है, अगर हम देखें पोर्टल ट्राइएड बेसिकली तीनों जो बाइल डक्ट है, वेन है और हेपेटिक आर्टरी है वो एक ही साथ जो है वो कंबाइन काम कर रही होगी. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके इसलिए दिखाया कि अगर हम फर्स्ट डायग्राम पे देखते हैं, हिपेटिक आर्टरी है, हिपेटिक आर्टरी क्या कर रही है, वो लिवर के जितने भी हिपेटोसाइट के सेल्स थे उनकी तरफ क्या कर रही थी, ब्लड को लेके आ रही थी. जब वो ब्लड को लेके आ रही थी तो वो किस तरह से ब्लड को लेके आ रही थी, वो सिनोसाइड्स में टू नेबरिंग जो सेल्स थे, टू नेबरिंग सेल्स के दरमियान में ब्लड का फ्लो था जिसे हमने सिनोसाइड कहा था, और सिनोसाइड जो है वो सेंट्रल वेन के अंदर ड्रॉ करी थी. इसी तरह से जो आर्टरी है, इस आर्टरी ने क्या करना है, हिपेटिक आर्टरी ने हिपेटोसाइड स्पेस के दरमियान में से सिनोसाइड स्पेस के अंदर जो है वो सेल को ब्लड को लेके आना है टुवर्ड द सेंट्रल वेन. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हिपेटिक पोर्टल वेन भी थी. अब वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, लेकिन हम इसको यहाँ पे अकेले सेपरेटली देख रहे हैं कि सेपरेटली इसका क्या क्या फंक्शन है. अब हिपेटिक पोर्टल वेन है, हिपेटिक पोर्टल वेन आल्सो सेम take blood toward the central vein. Then there is the bile duct. We also said there is the bile duct is present. The bile duct will take the bile opposite to the blood direction. Okay.
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए तीनों जो है वो फंक्शंस को इकट्ठे दिखाया हुआ है। यहाँ पे आर्टरी है जो कि ब्लड को लेके जा रही है, पोर्टल वेन है जो कि वेनस ब्लड को लेके जा रही है। पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी दोनों जो है वो एक ही वेन के जरिए जो है, एक ही स्पेस के जरिए जो है वो साइड के अंदर ड्रेन करेंगे। यहाँ से सेंट्रल वेन बनती है और सेंट्रल वेन जो है वो जाके ड्रेन करती है इनटू द हेपेटिक वेन, एंड हेपेटिक वेन विल combine to form the hepatic vein will combine to form and drain into the inferior and superior vena cava, and blood go back to the heart. Okay, and then there is also the bile duct. We can see here the bile duct movement. Okay, in this diagram we see the arterial and the venous portal vein blood direction. In this diagram we can see here there is the bile duct formation. The bile is produced here, ठीक है, in each जो है वो end plate, in between each end plate of hepatocyte, the bile is secreted into the canaliculi, and the canaliculi of different lobules combine, and these different lobules combine to form the small जो है वो bile duct, and this small bile duct combine to form the main duct, and this main duct then drains into the leave the liver and drain into the gallbladder. So the bile which is produced from the hepatocyte is drained into the gallbladder, and through the gallbladder when it is divided it comes into the hepatopancreatic to have a space at the level of duodenum, and in the duodenum bile, as we know, bile contains the bile salt, and the bile salt perform the function of emulsification, and the emulsification is the absorption of the lipid, has a main role. After that, we see that there is the portal triad. Portal triad is basically made up of hepatic artery, a branch of portal vein, a tributary of bile duct. In the previous diagram, we see the hepatic artery which takes blood toward the side and drain into the central vein. There will be the portal vein. The portal vein which also takes blood toward the central vein. And a tributary of bile duct, the hepatocyte, which is the two hepatocyte and plates, hepatocyte secrete the bile, and bile will move opposite to the blood direction and drain into the portal triad, and portal triad, different lobules portal triad combine to form the main bile duct, and the small bile duct, the main bile duct, and the main bile duct will leave the liver and drain into the gallbladder. In this diagram, we can also see here there is the hepatic artery. There is the hepatic to have portal vein, hepatic artery, and hepatic portal vein. Both combine into the sinusoid, the space in which the both blood mixes, and it will also provide to the hepatocyte cells oxygenated blood, and then this blood drain into the central vein, and through the central vein, deoxygenated blood back to the heart. And we can also see in this diagram there is hepatocyte, and between the two hepatocyte plates there is the bile, and the bile movement is opposite opposite to the direction of the blood. Okay, and two neighboring hepatocytes के दरमियान में जो है वो सिनोसाइड होती है, ब्लड जहाँ पे जो है वो, और टू जो है वो एंड प्लेट्स के दरमियान में क्या होता है, बाइल जो है वो कैनालिकुलाई होता है. So between the two two bile duct, there is the bile canaliculi, and between the two neighboring hepatocyte and plate, there is a sinusoid is present in which the blood moves toward the central vein. In this diagram, we can also see here the portal vein. Through the portal vein, where the blood will go, and from the blood will combine with the hepatic artery, and through the hepatic artery, the blood will go into the central vein, and different lobules have a central vein have combined from the intralobular veins, and then intralobular veins, and then intralobular veins will drain again to the inferior and superior vena cava by forming the hepatic vein. Okay.
The liver will receive around over 1500 ml of blood per minute, and the blood supply of the liver is derived 80% from the portal vein and the hepatic artery 20%. The renal branches of the hepatic portal vein and the hepatic artery keep together and mix as they enter. Okay, the liver mostly जो है वो contain the 80% जो है वो blood is through the portal vein and 20% through the hepatic artery. Okay. And the sinusoids are distensible vascular channel which is lined by penetrated endothelial cells. Now, in this slide, we can see what is basically the portal system. In the normal blood supply, we can see the blood away from the heart move toward the arteries, and arteries is converted into the arterioles and capillaries, venules, veins through the superior and inferior vena cava, blood back come back to the heart. But in this diagram, you can see the blood ciliary artery will send blood uh, that is oxygenated blood into the stomach, the spleen, pancreas, small intestine, and colon through the superior mesenteric artery, ciliary artery, and inferior mesenteric artery. But from this, the vein which form not go back to the heart, it drain into the liver through the portal vein. So this type of system in which the blood do not move back to the heart, but it comes back into another organ and form another network of capillaries. So there is also the capillary network which is at the level of stomach, spleen, pancreas, small intestine, colon cells, and from this the main जो है वो vein form, and this vein is also known as the portal vein, and this vein will not go back toward the heart, but it drain into the liver, and in the liver another network of capillaries will form, and this network of capillaries then drain into the hepatic vein, and this hepatic vein will drain into the inferior vena cava, and through the inferior vena cava blood comes back to the heart. तो क्या हुआ कि जो स्टमक से स्प्लीन से पेंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन से ब्लड आ रहा था वेन के जरिए, वो वेन जो है वो हार्ट में ड्रेन नहीं करती, बल्कि वो वेन ड्रेन करती है पोर्टल वेन के जरिए लिवर के अंदर। होना तो ये चाहिए था कि उस वेन को ड्रेन करना चाहिए था हार्ट में, लेकिन वो हार्ट में ड्रेन नहीं करती, वो बेसिकली लीवर में ड्रेन करती है। वहां पे एक अदर कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो बनता है, और वो कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो लोब्यूल्स के लेवल के ऊपर हमने देखा, और वो लोब्यूल्स के लेवल से सेंट्रल वेन, देन इंटर जो है वो लोब्यूलर वेन, देन इंट्रालोब्यूलर वेन, एंड देन देयर विल बी द hepatic vein, and through the hepatic vein the blood drain into the inferior vena cava. So this type of system in which the blood not come back toward the heart, it will go into another organ and form the other capillary network, and then come back toward the heart. This type of system in which this type of system and this type of vein which drain the blood into the another organ is known as the portal vein, and this system is known as the hepatic portal system or the splenic circulation. So in the liver, we will study the hepatocytes arrangement. We will study the bile duct and the movement of the bile. We also study the movement and the blood system of the liver. And here is the biliary system. The biliary system is a system in which the bile will leave the liver. The right and the left hepatic duct combine to form the form the common hepatic duct, and this common hepatic duct will combine with the cystic duct of the gallbladder, and this duct of the gallbladder and this common hepatic duct will form the common bile duct. First of all, it was the hepatic duct, right and left, which forms the common hepatic duct. Common hepatic duct combined with the cystic duct to form the common bile duct, and this common bile duct will drain into the ampulla of Vater and form the ampulla of Vater when combined with the pancreatic duct, and this pancreatic duct and ampulla of Vater is also known as the hepatopancreatic duct. And this hepatopancreatic duct is open at the level of duodenum, and in the duodenum the bile secretion will go and the pancreatic secretion will go and perform the digestive function of the carbohydrate, lipids, and proteins. Okay, the biliary system of the extrahepatic biliary apparatus is formed by the gallbladder and extrahepatic bile duct.
Right and the left hepatic bile duct combine to form the common hepatic duct. It unites with the cystic duct to form the common bile duct. Okay, and the common bile duct then combined with the pancreatic duct to form the common hepatopancreatic duct or ampulla of bladder, which open at the level of duodenum and take secretion away from the liver and from the pancreas and perform the different digestive function. Okay. Now, in the previous diagram, we will study the location of liver. We will study the weight of the liver. We will study the weight of the liver, the biliary system, the blood circulatory system of the liver, the blood circulatory system, the biliary system, bile production system, and the arrangement of the hepatocyte liver cell in the lobules. Now we will study the function of liver. The first function of the liver is the metabolism. The metabolism will be the carbohydrate metabolism, protein metabolism, fat metabolism, drug metabolism. Because we know all the products which are absorbed in the small intestine in the colon at the level of the spleen will not which are absorbed in the blood, and this blood will come back towards the liver, not go back towards the heart. So जितनी भी कार्बोहाइड्रेट की अब्जॉर्प्शन हुई एंड प्रोडक्ट की, प्रोटीन की, फैट की, ड्रग की, तो वो जो अब्जॉर्प्शन के बाद उन्होंने अपने टारगेट एरिया पे जहाँ की जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने थे, तो अब वो फंक्शन जो है वो मुख्य लीवर में होंगे। ठीक है, लीवर में जो है वो इन सारे एंड प्रोडक्ट की क्या हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म। नीम के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी की प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टोरेज फॉर्म में भी हो सकती है और एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, liver perform the carbohydrate metabolism in the form of storage of glycogen, conversion of lactose and fructose into the glucose, and gluconeogenesis. Gluconeogenesis is the formation of the glucose from the protein other than carbohydrate. We can see in this diagram the elevated blood glucose level. If in the blood the level of glucose increase, then the liver convert this into the glycogen and the normal blood glucose level will be formed. If there is less glucose in the blood and fall in blood glucose level, then the liver then convert this glycogen into the glucose and the normal blood glucose level will be maintained. तो इस पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि लीवर का जो मेन फंक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है। वो मेटाबॉलिज्म जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्म में भी हो सकती है, और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या था, कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज एंड फ्रक्टोज इनटू द ग्लूकोज की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो जो लीवर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है बॉडी के अंदर। अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर जाता है तो यही लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूकोज एंड नॉर्मल जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल मेंटेन। So the first function of the liver is metabolism, and in the metabolism, the first function is the carbohydrate metabolism. Okay, now we see the lipid metabolism. In the lipid metabolism, the liver will perform the anabolic metabolism and metabolism function. In the anabolism, the synthesis of de novo cholesterol and fatty acids, and synthesis of fat from the proteins and carbohydrates. We also studied in the previous diagram. If the level of glycogen is completed in the liver, अगर जो है वो ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज की, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज किया था तो लिवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था। जब लिवर के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल भी एक्सीड करने लगता है, लिवर जितने ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता था उसने उसको स्टोर कर लिया है, उसके बाद अगर ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ने लगता है ग्लूकोज तो लिवर जो है उस ग्लाइकोजन को जो है वो फैट की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देता है।
तो सिंथेसिस ऑफ फैट फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही है कि जब ग्लाइकोजन का लेवल अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है तो अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगी लिवर के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटाबोलिज्म में ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शन। ओके, जो लीवर के अंदर जो फैट स्टोर हुई थी, अगर अब हमारे पास एनर्जी के स्टोरेज और रिसोर्सेज कम हो गए हैं तो वही फैट जो है वो कैटाबोलिज्म की फॉर्म में हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो लिवर के अंदर हमने फैट की मेटाबॉलिज्म के दो फंक्शन देखी हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर हमने सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड, और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ फैट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एंड कैटाबॉलिज्म में अगर हमारे पास सोर्सेज कम हो गए हैं तो यही जो फैट स्टोर होगी वो क्या होगी, एनर्जी को जो है वो परफॉर्म करेगी थ्रू कैटाबॉलिक फंक्शन की। ओके, देन द मेटाबॉलिज्म ऑफ जो है वो de novo जो है वो बेसिकली अकर कर रही है इन द लिवर एज वेल एज इन द पेरिफेरल टिश्यू, and for the fatty acid synthesis as well as cholesterol synthesis engaged in acetyl-CoA. The acetyl-CoA is basically the product which form acetyl-CoA from metabolism of carbon skeleton of protein. Acetyl-CoA enter into the lipogenesis pathway and form the synthesis of जो है वो fats from the carbohydrate and protein. So acetyl-CoA is basically the product which perform the energy, and acetyl-CoA is also the same product which if enter into the lipo-oxygenase pathway, then it will cause the formation and the synthesis of fat from the carbohydrate and protein. Then there is the protein metabolism. The protein metabolism is in the form of deamination of amino acid. From the amino acid, the amino acid is removed, which is known as the deamination of amino acid, formation of urea, and interconversion of non-essential amino acid and formation of plasma protein. So, deamination of amino acid, formation of urea, interconversion between non-essential amino acid and formation of plasma protein is basically the protein metabolism which is occurring in the liver. Protein metabolism, formation of urea. Basically, ammonia which is formed from the deamination is highly toxic in the liver. This ammonia is combined with the two molecules of ammonia will combine with carbon dioxide and form urea. And this urea is less toxic and can easily diffuse from and excrete from the kidney. In this diagram, there is conversion of amino acid plus keto acid, transamination. Transamination will form the amino acid, and this amino acid is converted into the urea. When it combined, when two molecules of ammonia combine with carbon dioxide in the liver, and then they form urea. And this urea is then through blood reached away in the kidney, and through the kidney it is excreted from the body. So we are studying here the deamination may also occur in the gut through gut bacteria, and this ammonia formation, this ammonia then enter into the urea cycle, and this urea cycle avoid the ammonia intoxication which cause the hepatic coma, death and death avoided. तो क्या हुआ कि जो डीअमाइनेशन से अमाइनो एसिड की अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही थी वो लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके यूरिया बना रही थी, और वो यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर रहा था, ठीक है। और अगर वो यूरिया एक्सक्रीट नहीं होता, अमोनिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा, तो वो अमोनिया जो है वो हिपैटिक कोमा और डेथ जो है वो के पास करेगा, और उस डेथ को जो है वो हम यूरिया के जरिए अवॉइड कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट फंक्शन लीवर का देखा जो कि मेटाबॉलिज्म था, मेटाबॉलिज्म इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, we studied in all these slides. After this we will see the storage function of liver. We also know the storage function of liver is the storage of glycogen, amino acid, iron, folic acid, vitamin A, B12 and D. These are all the products which are stored in the liver. Then there is third function which is the synthetic function. The liver produces glucose by gluconeogenesis.
अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन का सोर्स है वो भी जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं उनको ग्लूकोज जो है वो ऐसी चीज चाहिए। ठीक है, अगर उनको नहीं चाहिए तो न्यूरॉन्स अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो जो लीवर है वो क्या करता है, जो प्रोटीन होती है उनको कन्वर्ट करता है इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। Okay, so the synthetic function of liver is the production of glucose from gluconeogenesis, synthesis of plasma proteins, and it also synthesis different types of steroids, which is somatomedian and heparin. Somatomedian has a main जो है वो role in the growth hormone. Somatomedian combined with the growth hormone and then it will perform the indirectly function of growth hormone at the level of bone and in the protein metabolism. Okay. The factor of the plasma protein which are generated from the is the clotting factor, is the complement factor, and the hormone binding protein which are synthesized by the liver. तो सिंथेटिक फंक्शन में ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन है, प्लाज्मा प्रोटीन की प्रोडक्शन है एंड स्टेरॉइड की प्रोडक्शन है। Secretion of bile. We already study in the digestive system. The liver will secrete the bile, and the bile will contain the bile pigment, bile salt, cholesterol, fatty acid, lecithin, and these bile pigment has a main role in the absorption of fat. Then there is the excretory function. The liver excretes cholesterol, bile pigment, heavy metals, toxin, bacteria through bile. Then there is heat production. As we know, the main metabolic function, the metabolism of carbohydrate, the metabolism of protein, the metabolism of fat is mainly occur in the liver. So there is high level of heat. ठीक? So enormous amount of heat is produced in the liver because of the metabolic reaction. And the heat which is produced in the liver is more high than the heat which is produced in another organ of the body. Then there is seven is a hemopoietic function. Hemopoietic means कि blood cells की जो है वो production होना. So in the fetus hepatic stage, liver produce the blood cells. It stores vitamin B12 which is necessary for the erythropoiesis. Means erythropoiesis, red blood cells की production को erythropoiesis कहते हैं, and iron which is necessary for the synthesis of hemoglobin. So लीवर क्या करता है, फीटस के अंदर जब ब्लड जो है वो प्रोडक्शन करवा रहा होता है तो ये विटामिन B12 को स्टोर कर लेता है, ठीक है, फॉर एरिथ्रोपोइसिस, एंड आयरन को भी स्टोर कर लेता है फॉर द हीमोग्लोबिन. तो hemopoietic function में vitamin B12 which is necessary for the RBC production and the iron which is also necessary for the hemoglobin of RBCs is also जो है वो produced in the liver. And the hemolytic function. The senile RBCs after a lifespan of 120 days are destroyed by the reticuloendothelial cell and the Kupffer cells of the liver. हमें पता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने लाइफ स्पैन के बाद क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं. अब जो स्प्लीन है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, ब्रेक डाउन कर रही होती है आरबीसी का हीमोग्लोबिन को जो है वो सिक्रीट कर रही होती है. अब उन हीमोग्लोबिन जो है वो लीवर के अंदर आती है in the form of bilirubin, and then it will convert it into the different conjugated to unconjugated form is converted into the conjugated form, and this conjugated then is secreted back into the intestine, and from the intestine it is secreted through the feces and through the kidney. So the hemolytic function is basically the RBCs are destroyed by the reticuloendothelial cells and the Kupffer cells of the liver. The ninth function of the liver is the inactivation of the hormone.
The hormone of the liver catabolize the hormone, growth hormone, growth hormone, cortisol, insulin, glucagon, and estrogen. And it also inactivates the drugs, particularly the fat-soluble drugs. The fat-soluble drugs are converted into the water-soluble substances, which are excreted through the bile or urine. So there is the defensive and the detoxification function. The defensive function is basically through the Kupffer cells, and these are macrophage cells, and they play an important role in the foreign bodies, and they can play an important role of defense in response of the foreign bodies such as bacteria. In the response of the reticulo and the cells of the liver also produce the interleukins, the new in tumor necrosis factors which activate the immune system of the body, and removal of the toxic property is known as detoxification. तो डिफेंसिव फंक्शन जो है वो लीवर का इन द फॉर्म ऑफ कुफर सेल्स है जो कि फॉरेन बॉडी को इंगल्फ कर लेते हैं, और दूसरा जो है वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन जो कि इम्यून सिस्टम की जो है वो सेल होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो यहाँ से होने लगी है लीवर। इसके अलावा लीवर का जो फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी है। वो या तो डायरेक्टली जो है वो डिजनरेट कर रहा होता है या कन्वर्ट कर रहा होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को into non-toxic जो है वो substances. Conversion of the toxic substances into the non-toxic जो है वो material by means of conjugation with gluconic acid and sulfate. जो non-toxic substances है इसकी हम example जो है वो देख सकते हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हमारा क्या होता है जो बिलीवर्डिन होता है जो कि कॉन्जुगेटेड जो है वो फॉर्म जो है वो ब्लू रिबन जो है वो अनकॉन्शियस ओके। अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन होता है, जो स्क्रीन होता है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में क्या होता है इम्यून सेल की डिस्ट्रक्शन खड़ी हो जाती है, ठीक है। इम्यून सेल आरबीसी वो क्या करते हैं लीव कर देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब जैसे ही वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो है वो लीवर में आएगा, तो यहाँ पे जो लिवर में फिनाइल आरबीसी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीम, and the heme portion is also converted into the biliverdin, and from the biliverdin it will be converted into the bilirubin, and biliverdin and through the blood it will reach into the free bilirubin, and this free bilirubin, this function typically occurs not in the liver, it will occur in the spleen or reticular endothelial organs, okay, and this is known as the reticular endothelial system. ओके इन द स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर सबसे पहले क्या होता है जो आरबीसी होते हैं जब उनका लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फिनाइल आरबीसी के अंदर। फिनाइल आरबीसी से ग्लोब्यूल जो है वो निकलेगा, तो वो हीम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब हीम में से आयरन निकल जाएगी तो बिलिवर्डिन में, और बिलिवर्डिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बिलिरुबिन में। अब जो बिलिरुबिन है ये फ्री फॉर्म में होती है, ठीक है। ये फ्री फॉर्म बिलिरुबिन जो है वो लीवर में जाएगी और वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगी। जब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनती है तो ये कुछ जो है वो इंटेस्टाइन में आ जाती है। फ्रॉम द इंटेस्टाइन यूरोक्लिनोजन जो है वो फॉर्मेशन होता है, यूरोक्लिनोजन जो है वो किडनी के थ्रू जो है रिमूव हो जाता है, और कुछ जो यूरोक्लिनोजन है इट विल बैक टू द लिवर एंड थ्रू द इन द लिवर द स्कीम जो है वो मेकैनिज्म जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एंड देन थ्रू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट विल बैक टू द इंटेस्टाइन। तो कुछ जो है वो सिस्टम के थ्रू की जो है वो स्टीरो जो है वो स्टेरको जो है वो ग्लिनोजन की फॉर्म में भी जो है वो यूरोग्लिनोजन और स्टेरको ग्लिनोजन की फॉर्म में जो है वो ग्लिनोजन जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये जो हमारा सिस्टम होता है ये बेसिकली क्या होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है, और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो सेल्स होते हैं लीवर के अंदर। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ लीवर को थोड़ा समरी देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ लीवर में स्टोरेज फंक्शन था, डिजनरेशन फंक्शन था, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन था, एंड सिंथेसिस का जो है वो फंक्शन था। स्टोरेज में ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन B12, डीपीके, कॉपर, आयरन। डिजनरेशन में इंसुलिन की बिलिरुबिन की अमोनिया की ड्रग्स की। मेटाबॉलिज्म में हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया, एंड सिंथेसिस में सीरम अल्बुमिन कोएगुलेशन फैक्टर, reactive protein, carrier protein, hormones, pro-hormones. These are also synthesized in the liver.
So, according to the course outline, the liver is basically the most important topic of the whole जो है वो content. The structure of liver can be come in the question. ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि draw the structure of the liver. ठीक है, अब जब आप स्ट्रक्चर ऑफ लीवर को ड्रॉ करेंगे तो आपने उसके अंदर जो है वो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, उसके बाद उसकी जो है वो लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर को, फिर आपने लोब्यूलर स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ करना है, लोब्यूल्स के लेवल को, और उसके साथ ही आपने उसकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी जो है वो ड्रॉ करना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड write down a note on the function of liver and the function of liver related to detoxification. ठीक, तो आपने जो डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है जिसके अंदर टोटल डिस्ट्रक्शन की और कन्वर्जन ऑफ जो है वो वन जो है वो मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, जिसमें हमने जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और आरबीसी डिस्ट्रक्शन की जो है वो बात की है। इसके अलावा जो है वो अमोनिया साइकिल भी जो है वो इसके अंदर हम ले सकते हैं, जिसके अंदर अमोनिया को जो है वो हम यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी जो है वो लीवर का जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन के काम में आ सकता है। मैं एक बार जो है वो रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन कि क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, और द सेकंड क्वेश्चन विल बी द राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ लिवर एंड एक्सप्लेन द डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन ऑफ लिवर। जब आप डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन ऑफ लिवर को एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसके अंदर जो है वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, जिसके अंदर जो है वो बिलिरुबिन जो है वो बिलिरुबिन प्री बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुआ, उसको डिस्कस करना है। साथ में आपने अमोनिया साइकिल को भी जो है वो यूरिया साइकिल को भी डिस्कस करना है, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक हो गया, तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको लीवर और लीवर के फंक्शन जो है बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।